Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम नितिश राजोरा है और मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में एयर 268 हासिल किया है. और आज मैं DKT के प्लेटफॉर्म से अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करूंगा. तो मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ. मैं दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली के फेथ अकेडमी से अपनी स्कूलिंग करी है. और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी है. और उसके बाद 2019 से 2021 में मैंने कॉमर्स में ही अपना मास्टर्स करा है हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से. तो अब लेकिन मैंने अपना ऑप्शनल जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था. तो जैसे न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उन सब का एक की डिसीजन होता है कि वो ऑप्शनल कौन सा ले. तो इसके बेसिस पे जो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपको थोड़ा जो आपका इंटरेस्ट है और जिस फील्ड में आपको ज़्यादा रुचि है वो आप अगर अपना ऑप्शनल लेते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा और आपको उतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया. तो इसीलिए मेरा जो इंटरेस्ट का क्षेत्र था वो था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसलिए मैंने उसको अपना ऑप्शनल लिया. तो अब मेरी स्ट्रैटेजी, तो मैंने ऑप्शनल की डेडिकेटेड पढ़ाई जो स्टार्ट करी थी वो थी 2019 नवंबर से. मैंने कोचिंग ऑप्शनल की पॉलिटिकल साइंस की ली थी शुभ्रा रंजन मैम के पास से 2019 नवंबर में. और वो कोचिंग चली थी 2020 मार्च तक. और फिर वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, क्योंकि उससे पहले तक मैंने सिर्फ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की ही पढ़ाई करी थी. तो एक न्यू फील्ड में आना, वो भी पॉलिटिकल साइंस जैसी इतनी गहरी, इतनी डीप, इतनी वाइड फील्ड में आना, that was a altogether new experience as well as a challenge for me. And with the help of Shubhra Ranjan ma'am and those materials, I was able to navigate through it. So firstly, I would like to classify this into four part of our optional syllabus, optional paper. So in paper 1 we have two sections, that is section A and section B. तो section A जो होता है वो generally thinkers के पे ज़्यादा फोकस होता है. तो उसमें आपको एक सेट पैटर्न होता है क्योंकि वो ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट होता है. लेकिन एक जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है कि उन स्टैटिक पार्ट में भी आप कुछ न्यू डाल सकते हैं, आप करंट हैपनिंग से रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं. मैं इसका एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव हैना अरेंट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इन आवर सिलेबस ऑल्सो इन सेक्शन A of paper 1. And Hannah Arendt has given theories about totalitarianism and these philosophies that she has propounded. So इनको अगर आप किसी तरह आज के किसी हैपनिंग से लिंक कर सके, इन सबको आप किसी आज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से लिंक कर सके, तो ये एक फ्रेशनेस आपके आंसर्स में लाता है और आपको बाकी आंसर से अलग करता है. तो मैं जितना हो सकता था उतना ट्राई करता था कि जो स्टैटिक पार्ट है ऑप्शनल सिलेबस का, उसमें भी कुछ करंट हैपनिंग से, कुछ करंट डेवलपमेंट से, कुछ न्यू पॉलिटिकल अफेयर्स से कुछ उसमें आंसर में अपने ज़रूर लिखूँ मेंस में. तो दिस वाज वन डिफरेंट एस्पेक्ट दैट आई फॉलोड. सेकंड इन द पेपर 1 सेक्शन A was that I thoroughly learned all the thinkers and the crucial basic philosophies that they have propounded. For example, Hannah Arendt is for totalitarianism, or what Plato talks, or what Socrates or Aristotle talks. So you should know about the basic core thinking, basic core philosophies of those thinkers. और एक बार जब आपके पास वो समझ आ जाती है, वो नॉलेज आ जाती है कि उन थिंकर्स की बेसिक फिलोसफी क्या है, तो आप उस अपने आंसर को किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो आप उसको इंडियन सिस्टम में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन से लिंक कर सकते हैं. तो ये समझ आपको धीरे धीरे डेवलप होती रहती है. तो दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर 1 सेक्शन A. देन इफ़ वी कम टू पेपर 1 सेक्शन 2, दैट इज़ द इंडियन गवर्नमेंट पार्ट.
then that part is also very dynamic as well as static. For example, about the various constitutional provisions, about the various constitutional bodies, उन सब के आपके पास एक basic understanding होनी चाहिए. For example, I always made sure that whenever I'm mentioning any constitutional body, I try to also give the constitutional article corresponding to that body. So that gives an extra weightage to your answer. So that was one small point that I would like to mention. Also, this is one part which is the most dynamic and in which you can include very much from the current affairs part. For example, what all are the happenings in the election commission or the one nation, one election or the various aspects like this. So you can always include these in the static part in the section B part. So this was the section B part. Then उसके बाद आता है paper 2, that is generally about the international relations and foreign policy part. So this was one paper which I enjoyed the most because international relations is something that excites me. So इसमें section A जो होता है वो होता है थोड़ा comparative politics, that is likely a static part, लेकिन उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ dynamic तो होता ही है. तो section A comparative politics जो था उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड जो नोट्स थे शुभ्रा मैम के और जो बाकी न्यूज़पेपर में जो हैपनिंग्स थे उनके बेसिस पे मैंने उन सबको एक आपस में थोड़ा मिला जुलू के एक अच्छे से अपने खुद के भी नोट्स तैयार करे जो मैं एक्चुअल फाइनल आंसर्स में लिखता था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका एक पर्सनल टच हर आंसर में होना बहुत ज़रूरी है. तो जो मेरा अलग सिग्नेचर होता था वो होता था कि कुछ बिल्कुल करंट हैपनिंग्स जो बिल्कुल ऐसी कंट्रीज से हो जो हम जनरली न्यूज़ में नहीं सुनते. For example, from South America or from Africa, and that the news that from those continents we try to bring into our static part, our dynamic part, and that information, if we can relate it with some thinkers, with some philosophers, and that would be very crucial. और इसके अलावा जो बेसिक पेपर ए के हम पेपर 1 के जो हम थिंकर्स और फिलोसोफर्स पढ़ते हैं, अगर हम उनको पेपर 2 में कहीं कोट कर सके, that is also very crucial and that is also very helpful, because examiner then comes to know that this person has understanding, this person has a holistic understanding. For example, I tried to quote Aristotle or Plato somewhere in my paper 2 also, because there are some aspects which are overlapping and in which you can use the thinkers of paper 1 also. So that is one part that I followed. And then coming to paper 2 section B, that is the India and the world, which corresponds to India's foreign policy and India's diplomacy. This part is very much dynamic and it is one of the most important part, because इसका आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा effort लगाना पड़ता है, because इसमें you have to be thorough with all the current happenings and what are the India's position in all of those happenings. For example, if we talk about the duration in which our paper was going on, some of the key themes that were in news were the quadrilateral mechanism, that was the United Nations. So we have to be thorough with those main themes, and you have to be understanding of India's viewpoint on those themes. So that is one aspect in which you have to make an effort and which you have to do your 101%. So I would say that. And for example, in that part also, I try to quote as many thinkers, as many leaders as possible. For example, there are many books on foreign policy that you can read. For example, I read books like The India Way by our Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and I tried to quote many quotations from that book in my section B of paper 2, because that is very much relevant also, as well as that is corresponding to a syllabus. There are other books also which I have read during this phase, though I would not recommend those books as some standard books, but these books could be add-on to your knowledge base. So I read Hard Choices by Hillary Clinton or Choices by Shiv Shankar Menon. So these books gave me a holistic understanding of what is foreign policy, what is diplomacy, and I generally try to quote from these books in my final answers. So this was about my optional and about the answer writing. And one other aspect that I would like to highlight is the role of YouTube and some YouTube channels and platforms that helped me immensely in my optional preparation. For example, I would like to mention the Prince Cut the Clutter by Shekhar Gupta.
that series of Cut the Clutter is very helpful in writing our optional answers, especially in the IR part. Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. That part is very dynamic and you need to also have some current knowledge about that. So that is one channel. Second is Karan Thapar's interview on The Wire. That was also very helpful. Third is the Caspian Report YouTube channel, in which there are many current developments and they regularly post some videos about some international related issues. So that was also very helpful. Fourth is the PIB channel of the Government of India. That is the Press Information Bureau. The YouTube channel host all the government schemes, all the various press conferences of various honorable ministers of the government. So if you have direct understanding, if you learn direct from the ministers or direct from the secretaries, then it gives you an edge over the other students, because generally what happens is that we read from the newspapers and the magazines, and in those magazines and newspaper the whole information is not given. Some crucial and important part is only given. सो मैं ये कोशिश करता था कि मैं डायरेक्टली जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनके पास से डायरेक्ट सुनूं. तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का यूट्यूब चैनल. एंड द फिफ्थ चैनल इज़ द ORF. तो ORF की वेबसाइट भी है, ORF का यूट्यूब चैनल भी है. एंड आई यूज़ टू फॉलो बोथ ऑफ दीज बिकॉज इनसे क्या होता है कि डेली दे हैव जनरली 4 आर्टिकल्स पोस्टेड ऑन द ORF वेबसाइट एंड वीकली वी हैव सम शोज इन द ORF यूट्यूब चैनल. सो अगर आप उनको एक बार पढ़ते हैं, उनको एक बार गो थ्रू करते हैं, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट द करंट डेवलपमेंट्स एज वेल एज अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी पार्ट. सो दैट वाज लार्जली माय ऑप्शनल स्ट्रैटेजी. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट इन PSIR there is lot of overlapping with other GS papers also. For example, in GS2 my optional paper was very crucial because I did not specifically study for GS2 as my optional उसमें help कर दी. Secondly is that GS4 ethics part, क्योंकि उसमें भी हम generally पढ़ते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, जॉन रॉल्स, बेंथम. इन सबको हम GS4 ethics के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कोट करना पड़ता है. तो वहाँ से भी मुझे ऑप्शनल ने हेल्प करी. तो ये जनरली मैं सोच के चलता था कि एक बार अपना ऑप्शनल एक बार आप बहुत स्ट्रांगली तैयार कर सकें, और ख़ासकर पॉलिटिकल साइंस जैसा ऑप्शनल जो आपको बाकी पेपर में भी हेल्प करता है, तो आप अपने आप आपको एक एज मिल जाती है. क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप उस पर बाकी सब बिल्ड कर सकते हैं, बीट द GS, बीट द एथिक्स, बीट द एसे. और इस बार तो एसे का टॉपिक भी जो था वो एक था रिलेटेड टू फेमिनिज्म एंड वुमेन. So that part also it was somehow covered in my optional also. So I would like to say that optional की एक बार आप अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो आपको पूरे UPSC मेंस में आपको वो हेल्प करेगा. So this was my optional strategy and thank you so much. Namaste.